गुड इवनिंग एवरीबॉडी ईएसपी क्लासेस रे आपन स्वागत। सो चलंत आम स्टार्ट करवा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आम पार्ट 4 ओके। या पूर्व तीन पार्ट कंप्लीट करने जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखी ना से चाहिए प्रीवियस लेक्चर को जाके देखि पारे। ओके चलंत स्टार्ट करवा हमर नेक्स्ट पॉइंट रो। सो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एट राइट maximum demand of indicator. So maximum demand indicator कौन? ओके और राइट मैक्सिमम ऑफ डिमांड इंडिकेटर राइट मैक्सिमम कौन डिमांड इंडिकेटर दी टाइम भीतर हमें डिफरेंस कौन जानिबा। सो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर माने कौन? इंडिकेटर रेकॉर्ड द मैक्सिमम पावर जेतने मैक्सिमम पावर ऑफ कंज्यूम होबो सेही समय रे हमको मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर रेकॉर्ड करिवो। दैट मींस अफ गोटे कंज्यूमर जेते बेले कंज्यूम करिवो मैक्सिमम ऑफ कौन पावर दैट मोमेंट ऑफ से कौन होबो निश्चित भाव रे मैक्सिमम ऑफ डिमांड इंडिकेटर रेकॉर्डेड होबो and these are used for the large consumer and because large ako ame code व्यवहार कराउछु जोटे large consumer of रोइछन्दी that moment of maximum demand indicator को हमें व्यवहार करछु। so काहे की व्यवहार करछे because large consumer have to pay the cost of electricity in a two parts of a tariff जेतेले अधिक कंज्यूमर हे जिवे that moment रे हमें कोन करछे टैरिफ दी टू पार्ट ऑफ टैरिफ सिस्टम रे ही पेमेंट करा दे। सो तमे जानि थियो बेले बेले इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बिल दोछो बिल जेतल दोछ तमे टू पार्ट ऑफ टैरिफ रे दोछ केमिति सपोज 1 रो हमर 100 यूनिट पर्यंत दैट इज सम ऑफ अलग प्राइस जेमति कि एग्जांपल 5 रुपीस ओके देन above of 102 above of 102 more than of देति आसीबो टैरिफ तार चेंज हे तो दैट मींस ऑफ 7 रुपीस भी हे जाय पारे मे बी एज पर इन इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑन दे चार्जेस हे पारे। So right of maximum demand कौन? The working principle of this instrument depend on the heating effect. So जो हमें right maximum demand indicator जो वर्किंग करछि कहा पर डिपेंड करछि ना हीटिंग इफेक्ट ऊपर डिपेंड करछि वर्किंग प्रिंसिपल बाय द लोड ऑफ करंट कहार ना लोड करंट। सो जेतले करंट हमर अधिक हे जिवो लोड करंट दैट मोमेंट हीटिंग ऑफ इफेक्ट आल्सो बी प्रोड्यूस। सो सेही मोमेंट रे हम कोन ना राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर ऑफ शो करे। सो द इंडिकेटर इज एक्चुअली टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ एयर थर्मोमीटर। सो एयर जो थर्मोमीटर जो हमें यूज करछे से एयर थर्मोमीटर पई हमें कोन जो टेंपरेचर जो इंडिकेटर यूज करे दैट इज कॉल्ड ऑफ राइट मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिकेटर। सो नोट दैट गोटे पॉइंट को नोट रख मन रखिया जरूरी कोन दिस इंडिकेटर कैन बी यूज बोथ एसी एंड ऑफ डीसी। जो हमें इंडिकेटर दीटा हो जानिले मैक्सिमम डिमांड हो कि हमर मैक्सिमम डिमांड राइट इंडिकेटर हो ताको बोथ एसी एंड डीसी रे हमें व्यवहार करूछे। The scale of the indicator is not of uniform. So scale ला केबेले कोन ए इंडिकेटर not uniform नुहे मन रखथिबो यूनिफॉर्म ऑफ नुहे because of heating effect is proportional to the square of the current काहे कि ना h is equal to I square मन रखथिबो I square ऑफ t बा I square हम बोली जानि छै जेतो हमर हीट जो बढ़िबो केमिति बढ़िबो ना करंट जते बढ़ि बढ़ि जिवो ई मध्य हीट मध्य अधिक हबो सेते हमें कोन करछे ना द स्केल ऑफ इंडिकेटर इज नॉट यूनिफॉर्म केबे होय ना। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा हमरे एनर्जी मीटर से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो इथरु मते बहुत थरा एग्जाम रे क्वेश्चन पचारसी। सो एनर्जी मीटर विषय हम ठीक जानिबा। ओके सो एनर्जी मीटर कहले कोन बुझुछे एनर्जी मीटर कहले ड्यू टू लो फ्रिक्शन और हाई टॉर्क जतेले हमें कोन एनर्जी मीटर पढिबा कोन ना केते प्रकार रे इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर। सो इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर हमें कोन देखुचे ड्यू टू द लो फ्रिक्शन और हाई टॉर्क टू वेट ऑफ रेशियो। सो मन रखथबो इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वेट रेशियो कोन रहते वेट रेशियो ऑलवेज इन हाई थाए। सो हाई टॉर्क थाए टू वेट रेशियो एंड these instruments are universal of use। आपको हमें यूनिवर्सल माने समस्त यूज करछे सदा बेले यूज करछे मैक्सिमम व्यवहार आपको हमें इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर करछे कोथरे ना एसी रे फॉर इन एसी and it can be measure energy with accuracy over the wide range of load power factors voltage and temperature। सो ये कौन मेजरमेंट करे सो मैक्सिमम क्षेत्र रे हमें देखिया गले ये लोड मेजरमेंट करबो पावर फैक्टर मेजरमेंट करबो वोल्टेज एंड टेंपरेचर ऑफ मेजरमेंट कर।
सो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल फेज टाइप ऑफ एनर्जी मीटर देखिबा सो कंस्ट्रक्शन कोन ना ड्राइविंग सिस्टम सेतिर जो रहिछि ड्राइविंग सिस्टम इट हैज ए टू इलेक्ट्रोमैग्नेट सो गोटे सिंगल फेज ऑफ एनर्जी मीटर रे केतरा मैग्नेट रहिछि ना दीटा इलेक्ट्रोमैग्नेट रहिछि व्हिच आर मेड अप लैमिनेटेड शीट इन ए सिलिकॉन स्टील जो हमें मेड अप तयारी हेछि कोते तयारी हेछि ना सिलिकॉन स्टील रे तयारी हेछि ओके कोन पे ना लैमिनेटेड जोडा करा हेछि so one of which voltage coil and the other is the current coil सिथि आउ कोन रहिछि ना दीटा coil रहिछि टू coil रहिछि गुटे होछि हमर प्रेशर कॉइल जोटा कि प्रेशर कॉइल बोले हम कहउछे आउट होछि करंट कॉइल बोले कहउछे सो प्रेशर कॉइल को हमें अदर फॉर्म रे कोन कहउछे ना वोल्टेज कॉइल मध्ये कहउछे एंड करंट कॉइल रो मध्ये याको अदर वर्ड रे आउ मध्ये कहउछि दीटा कॉइल जो रहिछि प्रेशर कॉइल गोटे करंट कॉइल गोटे ओके सो दैट इधर आउट जिनसे कोन रहिछि ना कॉपर शेडिंग बैंड जो हमर बैंड जो शेडिंग जो कराइतो एटा को मटेरियल तयारी हेतो ना कॉपर मटेरियल तयारी हेतो जोडे कोटे फिटिंग हेछि ना सेंटर रे सेंट्रल लिम्ब रे फिटिंग हेतो सेंट्रल लिम्ब बा सेंटर हमरा फिटिंग हेगी थिबो कहार ना शॉर्ट मैग्नेट रो and of the shunt magnet and a compensating of the coil so point be noted that इथरा हमें गोटे जानिले ड्राइविंग सिस्टम रे हमें कोन कोन जने shunt magnet and a compensating coil are fitted in the side of a arm of the series magnet so इथरे दीटा मैग्नेट रहला गोटे होछ हमर सीरीज मैग्नेट गोटे होछ हमर सीरीज मैग्नेट आउट होछ हमर कोन शॉर्ट मैग्नेट ओके मो पॉइंट आउथरे भलसे डिस्क्राइब कर दोछि आ इजीली जेमति तमे मन रख परिबो सो ओके सब फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर देखि नबा इज अ टू इलेक्ट्रोमैग्नेट इथरे केतला इलेक्ट्रोमैग्नेट रोछि ना दीटा इलेक्ट्रोमैग्नेट रोछि टू इलेक्ट्रोमैग्नेट ओके सो आउथरे कोन कोन देछि गुटे होछि हमर सीरीज गुटे होछि हमर सीरीज रोछि आउट होछि कोन हमर शॉर्ट रोछि गुटे होछि हमर सीरीज आउट होछि शॉर्ट शॉर्ट कोन ना इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमें यूजेस करूछे ओके आउ कोन करछे ना एथे लैमिनेटेड करा देछि लैमिनेटेड सो हमें समस्त जानि छै लैमिनेटेड जोटे कोनोसी एडी करंट बा हो सॉरी कोनोसी हमर इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्मेशन जतला पूरा लैमिनेशन करिया पड़िबो सो एको लैमिनेटेड हेछि कोथरे लैमिनेटेड ऑफ शीट एला सिलिकॉन स्टील शीट सिलिकॉन स्टील र शीट रे हमें लैमिनेटेड करिछे ओके सो आउ कोन करा अछि वन ऑफ द गोटे इथरे दीटा कॉइल रहिछि टू कॉइल इथरे केतरा कॉइल रहिछि ना टू कॉइल रहिछि कोन कोन रहिछि ना गोटे होछि हमर प्रेशर कॉइल गोटे होछि प्रेशर कॉइल आउट होछि हमर कोन करंट कॉइल गोटे होछि प्रेशर कॉइल आउटे करंट कॉइल ओके हाँ करंट कॉइल रहिछि आउ कोन रहिछि एथरा हमर कॉपर शेडिंग ऑफ बैंड यूजेस करा अछि सो एथरा कॉपर कोन होछि कॉपर शेडिंग बैंड व्यवहार करा जाइछि कॉपर शेडिंग बैंड व्यवहार करा होछि का सहित व्यवहार करा अछि ना टू अटैच इट इज शॉर्ट सहित टू अटैच शॉर्ट मैग्नेट बा शॉर्ट मैग्नेट सहित अटैच हेकि रहिछि ओके शॉर्ट मैग्नेट एंड आउ कोन यूज करा होछि ना एंड कंपेंसेटिंग बा कंपेंसेटिंग कॉइल बोले हमें कहउछे compensating coil so the connected हेकि रहिछि connected are fitted on the side of arm with series magnet का से तो fitted with का से तो arm with series magnet का से तो बुझ पाइला सीरीज मैग्नेट सो ए तो हमर एठी जानिले तीनटा जिंस हमें एथरे कोन कोन जानिले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एठी जानिले ड्राइविंग सिस्टम रे दीटा कॉइल टू इलेक्ट्रोमैग्नेट रहिछि गोटे होछि सीरीज आउट होछि शॉर्ट ओके जो लैमिनेटेड करा छै एटा को मटेरियल छै ना सिलिकॉन स्टील शीट मटेरियल रहिछि जो हमें एथरे आउ कोन रहिछि ना दीटा कॉइल रहिछि टू दीटा कॉइल कोन कोन गोटे होछि प्रेशर कॉइल आउट होछि हमर करंट कॉइल बोले कहउछे सो आउ कोन होछि ना आको हमें जो कॉपर शेडिंग बैंड यूजेस करूछे कॉपर शेडिंग बैंड जो यूजेस करछे शॉर्ट मैग्नेट एंड कंपेंसेटिंग कॉइल सहित अटैचमेंट करेगी फिटेड का सहित तो ना दीटा आर्म सहित जोटा कि सीरीज मैग्नेट बोले हमें कहउछे आर्म ऑफ द कार सीरीज मैग्नेट रो आर्म रे ए दीटा फिटेड हेकी रहितबो ओके
सो आउ कोन देखबा ना एइथरे हमें जानिले कोन जानिले ना ड्राइविंग सिस्टम विषय जानिले एबे चलो देखबा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कोन देछि ना रोटर और मूविंग सिस्टम इन दिस एल्युमिनियम ऑफ डिस्क आउर गोटे पॉइंट भी हमर आसी जो कोन एल्युमिनियम डिस्क यूज कराउची एल्युमिनियम को डिस्क जो एल्युमिनियम डिस्क यूज कराउची सो बेले बेले क्वेश्चन पचारे एनर्जी मीटर आमे जो डिस्क यूज करूछु सेटा को मटेरियल हेता जरूरी सेटा हेतु एल्युमिनियम मटेरियल हेतु जरूरी आ कोन ना माउंटेड विथ ए शाफ्ट मेड ऑफ अ लाइट alloy ओके से कोन हेतु ना शाफ्ट मेड इन लाइट alloy मटेरियल रे तयारी हेतु देन कंट्रोलिंग एंड ब्रेकिंग सिस्टम कोन जानिबा मतलब ब्रेक ऑफ मैग्नेट आउट भला पर मन रखथो एई जो हमें मैग्नेट जो हमें दीटा यूजेस करैछे दीटा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कराउची सीरीज एंड शंट आ कोन से जो सीरीज एंड शंट हमें कोन कहउछे ब्रेक मैग्नेट बोली कहउछे जतबेले हमें व्हेन द ब्रेक मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द डिस्क सो जतबेले डिस्क रे मूवमेंट करे मूव अवे फ्रॉम द डिस्क द स्पीड ऑफ द डिक्रीजिंग जाफले कोन हो स्पीड हमर decreasing haba and when the brake magnet is brought near the disc जेतबेले brake magnet पाखा पाखी जो कार disc रो then the speed will be increasing because that हमें magnet रे जानि छे कोन रहउची गुड brake magnet होउची कोन रहउची ना कोनोसी ओडे एल्युमिनियम पर डिस्क सब डिस्क मटेरियल हो तार ऊपर जो मैग्नेट ऑफ फ्लक्स होची बा मैग्नेट जो इफेक्ट दोची से इफेक्ट काम करता है सेत पे हमें जत्ते पाखा पाखी रवा नियर टू द डिस्क नियर टू द डिस्क कोले स्पीड कोन बा इंक्रीज हबो आ जत्ते हमें डिस्टेंस करे दवा स्पीड पे हमर कमी जीवो एंड व्हेन द डिस्क इज मूव टू क्लोजर टू एन आउटर ऑफ अ सर्कमफरेंस से पाखा रे रखी क्लोजर टू द आउटर बाहर चारि पाखर जो सर्कमफरेंस पाखा पाखी हबो then the speed of the disc is will be कोन हबो increase हबो and when the move away from the disc the speed is decrease सेतले हमें move away from the disc तार दूरे की रखिबा सेतले decrease हबो and disc से तो पाखो को रखिले सेटा हमर कोन हबो निश्चित भाबे speed is increase हबो जो जिनसडा रखु एटा कोन यूज करछे ना हमें ब्रेक मैग्नेट बोली कहउची कोन कहउचे ब्रेक मैग्नेट मन रखिथिबो ब्रेक मैग्नेट हमें कोन पे यूज कराउची ब्रेक मैग्नेट टू कंट्रोल द अपर सिस्टम को हमें ब्रेकिंग करिया पे कंट्रोल करिया पे हमें यूजेस करो छे ब्रेक मैग्नेट सो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन ना रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट इज कंस्ट्रक्शन जो हमर एटे रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन कोन छै ना फंक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड विथ ए रोटेशन ऑन द रोटर जदि हमर रोटर द रोटेशन हैला देन हमें जे कहबा ना फंक्शन हमर को रिकॉर्डिंग हे पर जदि रोटेशन हबो नाही ताली ये रिकॉर्डिंग हे परिबो नाही ओके चलो तो देखिबा नेक्स्ट पॉइंट मीटर ऑफ अ कांस्टेंट कोन ना मीटर ऑफ अ कांस्टेंट है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कासे तो एनर्जी से तो हबो सो n इज इक्वल टू का तो कांस्टेंट ऑफ एनर्जी के एनर्जी बोले हम कहू सो k इज इक्वल केता आसबो n बाय ऑफ एनर्जी सो n र माने कोन n र अर्थ है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सो एनर्जी र कोन यूनिट कोन एनर्जी रे हमर kWh so k is equal to कोन से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय kWh देन परसेंटेज ऑफ एरर केमते आसीबो ना परसेंटेज एरर आसीबो nx माइनस n ऑफ s डिवाइडेड बाय ऑफ ns into 100 ओके सो परसेंटेज एरर कोन हला nx माइनस ns by ns into 100 देन परसेंटेज ऑफ एरर कोन आसीबो ये मते गोटे फार्मूला किमा आउट मते फार्मूला परे कोन ना nx into ks divided by ns into kx minus of 1 into 100 ओके सो ये भी मते आल्सो गोटे फार्मूला करियो सो एटा हम जदि ks को जदि कहउचे ks र माने हला कोन कांस्टेंट ऑफ सब स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी मीटर कांस्टेंट एंड सब स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी मीटर आ जदि kx को कहउचे ना कांस्टेंट ऑफ एनर्जी मीटर and ns को कोन कहउचे ना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सब स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी मीटर nx हला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनर्जी मीटर जदि हमरे x लागि जीवो एनर्जी मीटर देन जदि s लागि रहितो कोन सब स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी मीटर सो दुईटा स्टैंडर्ड बुझी पाइलो गोटे s आ x लागि जदि s लागिवो ताले कोन सब स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर ताले एटा हमर हला कोन ns माने सब स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी मीटर देन nx माने कोन हो nx हला हमर कांस्टेंट जोडे कि हमरा यूजेस करूचे कहा पर एनर्जी मीटर रिवोल्यूशन बाबू टेस्टिंग ओके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनर्जी मीटर फॉर टेस्टिंग पाई सो मन रहला समस्त नेक्स्ट हला हमर टेस्टिंग पाई एंड एनएस हला हमर कोन हेतो
is a constant जोटा कि हमर सब स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी मीटर बोले हम कहछे ओके सो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा एरर ऑफ इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें एरर हमर रोची एरर कोन एरर रोची गोटे होची हमर फेज एरर अनदर इज स्पीड एरर अनदर इज फ्रिक्शन एरर and next point is our crimping error so ei je crimping error ta every exam re question पचार थाए so crimping error कोन हम phase error देखि चलिबा so phase error हला phase error removing and adjusting the shading coil जदि हमें shading coil को हमें adjusting करिबा ताहले हमें कोन हे परबा ना phase error ता हम कम हे fitted in the control of limbs and because the pressure of the coil has a same resistance due to which the current in it does not lag exactly in a 90 degree so it 900 ne exactly in 90 degree with the voltage okay ta mane ई कोन कहूची ये कहूची जदि हमें फेज एरर को रिमूव करि परिबा केमिति रिमूव करि परिबा ना बाय एडजस्टिंग ऑफ शेडिंग कॉइल ओके बाय एडजस्टिंग ऑफ कोन शेडिंग कॉइल जो हमें ओटे शेडिंग कॉइल जो हमें व्यवहार करछे से शेडिंग कॉइल को जदि हमें एडजस्ट करिबा जा फले कि हमें कोन परिबा ना फेज एरर को हमें मिनिमाइजेशन ऑफ करई परिबा काहेकि बिकॉज़ दैट प्रेशर कॉइल हैज ए सम ऑफ रेजिस्टेंस प्रेशर कॉइल रो किछि ना किछि रेजिस्टेंस अछि कहा जगरो ना ड्यू टू which the current in it does not lag जा फल कि करंट कोन लैगिंग करिवो नाही देन स्पीड ऑफ एरर कोन ना स्पीड ऑफ एरर हैला स्पीड ऑफ द मीटर इज इंक्रीजिंग जतले स्पीड ऑफ मीटर दा कोन इंक्रीजिंग हे जिवो देन द ब्रेकिंग ऑफ मैग्नेट इज मूव so breaking of magnet कोन हो मूव हे जिवो मूविंग करे मूव करबो एंड टुवर्ड टू द सेंटर ऑफ द मेटल डिस्क सो मेटल डिस्क हम कोन कहितले मु कहितले जदि स्पीड बढ़िबो जानिबो जे कोन हो ब्रेकिंग मैग्नेट जो हम यूज कोचे ब्रेकिंग मैग्नेट ता कहार क्लोज होबो ना डिस्क रो क्लोज होबो डिस्क रो क्लोज हे जिवो ओके जा फल रे कि कोन एंड द स्पीड ऑफ द मीटर इज डिक्रीज मीन साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा होबो जदि स्पीड हमें कमे देबा देन ब्रेकिंग जो मैग्नेट रहिछि कोन हो निश्चित ताठ दूरे कि रहइबो एंड द स्पीड कैन बी एडजस्टेड बाय इन एडजस्टिंग ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द मैग्नेट ताले स्पीड को हमें केमिति यूज करबा बाय एडजस्टिंग ऑफ द ब्रेकिंग मैग्नेट को यूज करबा okay and while testing the energy meter जतले हम energy meter टेस्ट करछ on a non inductive so inductive load और non inductive load अछि and the error can be eliminated by the correct or adjusting of the brake of a magnet so brake magnet को adjusting करिके हमें non inductive type of load रे मध्य आपको adjust करई परिबा speed को okay next point देखिबा ना friction कोन देसे additional of a torque is added to the driving of a torque काहेकि ना बाय इंसर्टिंग ऑफ अ टू शॉर्ट सर्किट लूप इन द शॉर्ट मैग्नेट जतरा हमें शॉर्ट मैग्नेट यूज करछे से शॉर्ट मैग्नेट हमें कोन करछे ना एडिशनल दिटा टॉर्क हमें एडेड करछे कोन एडेड कर ड्राइविंग द टॉर्क टू इंसर्टिंग ऑफ अ टू शॉर्ट सर्किट ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिया कोन ना प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन एडिशनल ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू द स्टैटिक एंड फ्रिक्शनल ऑफ टॉर्क सो या पर जो प्रोसेस होचे हमें जो प्रोवाइडिंग करछे प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन एडिशनल ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू द स्टैटिक एंड फ्रिक्शनल ऑफ द टॉर्क टू द स्टैटिक आकाश तब ना फ्रिक्शनल ऑफ द टॉर्क से तो ही हबो ओके okay next time देखिबा creeping error sometimes of a meter creeping of a moving slowly so बेले बेले देखिथिबो हमक मीटर टा स्लोली बुले ओके एंड इन नो लोड ऑफ कंडीशन कोन सी लोड दिया जाय तो किंतु हमर मीटर टा बुलुथिबो that error is called as a crimping error and while only voltage coil is excited and this is error is called as a crimping error जेतबेले ओनली वोल्टेज कॉइल बा प्रेशर कॉइल बोले हम जो कहउछे प्रेशर कॉइल एनालाइज हेथाय दैट मोमेंट अपॉन द मीटर कीप ए मूव इन स्लोली मीटर रे कोन जे डिस्क स्लोली मूव करथो किंतु हमर कोन लोड नथिबो से जो एरर ता से दैट इज कॉल्ड एज अ कोन क्रीपिंग ऑफ द एरर एंड टू रिमूव द इस एरर एरर को हमें रिमूव करिया पई हमें कोन करछे टू होल्स आर मेड ऑफ द मीटर disc very important question मन रखिथिबा very important question ए question दा डायरेक्ट इन पछे two holes will be made in the meter of a disc on the either side of the spindle at a 180 degree in opposite of a direction so the spindle रहिछि spindle रो 180 degree opposite direction रे हमें कोन करबा दीटा होल कराबो जा फल कि हमें कोन पे ना crimping error को हमें मिनिमाइजेशन करेबा ओके
नेक्स्ट देखिबा ट्राइवेक्टर ऑफ मीटर. So ट्राइवेक्टर मीटर हला कोन ना वोल्ट एम्पियर आवर इज मेजर बाय दिस इन ए मीटर. सो वोल्ट एम्पियर आवर मन रखतो कोन हेतबा वोल्ट वोल्ट एम्पियर आवर. ओके वोल्ट एम्पियर आवर जोडे की VAH इज इक्वल टू कोन आसीबो WH वाटर पावर स्क्वायर प्लस VAR रिएक्टिव आवर स्क्वायर रिएक्टिव आवर स्क्वायर रूट ओवर ओके स्क्वायर रूट ओवर. So next देखिबा हम कोन फेज सीक्वेंस ऑफ इंडिकेटर. फेज सीक्वेंस इंडिकेटर कोन द सीक्वेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू व्हिच द अल्टरनेटिव ऑफ क्वांटिटी इज assumed in a maximum value and respectively is called as a phase sequence. Okay, and the sequence with the help of the with the phase of a sequence is determined the three phases work is point be noted. जेतरा हमें फेज सीक्वेंस मेजरमेंट करछे बा डिटरमाइन करछे कहा पर डिपेंडेंट करछे ना थ्री फेज ऑफ द सर्किट ऊपर डिपेंडेंट करछे. सो दैट इज कॉल्ड द डिफाइन डिटरमाइन कराछि हेटा को हमें कोन कहछे सेटा हमें सीक्वेंस ऑफ इंडिकेटर बोली कहछे कोन कहछे ना सीक्वेंस इंडिकेटर बोली कहछे. सो फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर मीटर कोन ना एबे जाने फ्रीक्वेंसी मीटर हला इज ए वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर and electrodynamic type frequency meter. So frequency meter कहबले दी प्रकार रहिছে गोटे होचे vibrating of a rate frequency meter, another is the electrodynamic type of a frequency meter. So vibrating rate frequency meter कोन ना simplest frequency meter which work on the principle of a mechanical of resonance. So mechanical resonance principle रे काम करूची कोडा ना vibrating rate of a frequency meter. And it frequency range केते रहउचे ना आर 47 हर्ट्ज टू 53 हर्ट्ज and 57 hertz to 63 hertz. Okay, 63 hertz. So in this of a frequency meter is measured in a frequency is independent with the waveform of the supply voltage. So wave of the form of the supply voltage upare independent रहता है ना को टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट द वाइब्रेटेड रीड फ्रीक्वेंसी मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट. एंड इलेक्ट्रोडायनामिक कोन एंड दिस इज ए मूविंग कॉइल ऑफ द फ्रीक्वेंसी आपको हमें कोन कहछे मूविंग कॉइल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कहछे मीटर कहछे which is in a sub instrument of a ratio type of a meter. ताको हमें कोन कहछे रेशियो टाइप ऑफ मीटर मध्य कहछे जेडे इट फ्रीक्वेंसी केते रहता है ना 49 हर्ट्ज रो 51 हर्ट्ज पर्यंत हमें एथरे मेजरमेंट ऑफ करै परिबा. नेक्स्ट देखिया कोन ना पावर फीटर मीटर कोन. नेक्स्ट इज आवर पावर फीटर मीटर. तो पावर फीटर मीटर हैला इन a three phase of a balance circuit power feeder can be measured. So three phase of a balance circuit रे हमें कोन करछे पावर फीटर को मेजरमेंट करछे. पावर फीटर can be measured with the help of कार ना 2 watt meter method रे दीटा watt meter method रे. But in a unbalance of the circuit जतबेले हमें unbalance of a circuit uses करूचे that moment different of a phase have a different of a power factors. Hence the power factor meter is not used. जापरे कि हमें पावर फैक्टर मीटर केबेले यूज करू ना हो कोथरे ना हमर जतले अनबैलेंस ऑफ लोड सर्किट हो से मोटर पे पावर फैक्टर व्यवहार करू ना. ओके एंड सेकंड पॉइंट देखिए कोन इट डज नॉट रिक्वायर टू कंट्रोलिंग ऑफ द टॉर्क. यार कोनसी दरकार नहीं टू कंट्रोल कोन करे पे टॉर्क करे पे काहे कि ना इलेक्ट्रोडायनामिक पावर फैक्टर मीटर एंड मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर. सो ए जो दीटा का पावर फैक्टर मीटर देखुचो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप ऑफ पावर फैक्टर मीटर and moving iron type of power factor meter रे हमरो कोनोस रूपे कंट्रोलिंग टॉर्क को आवश्यकता नहीं. ओके सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट देखबा हम कोन ना ओमीटर देखबा. ओमीटर कहले कोन बुझुछो ना ओमीटर कहले गेले बेसिकली टू टाइप्स. ओके बेसिकली हम ओमीटर को केते बेले थि तीन दी प्रकार सर तीन प्रकार कोन होची गुटे होची सीरीज टाइप अनदर इज शंट टाइप अनदर इज रेशियो टाइप ऑफ ओमीटर. So ratio type of a ohmmeter does not have a controlling torque. So ratio type of ohmmeter रे केबेले controlling torque of नहीं. Okay next point देखिए कोन ना मेगर also known as a mega ohmmeter. So मेगर को हमें अदर वर्ड कोन कहछे ना मेगा ohmmeter बोली कहछे. आकु कोन पे आउ कोन मधे कहछे इंसुलेशन टेस्टर मधे कहछे इंसुलेशन ऑफ अ टेस्टर मधे कहछे. एंड व्हिच इज कोन पे मेजरमेंट करा देता है ना वेरी हाई रेजिस्टेंस पे हमें मेजरमेंट करूचे. सो इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल कोन थाए ना 0 आउट कोन थाए इंफिनिटी थाए. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट 0 इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, infinity is our कोन राइट हैंड अप साइड.
So आमे आउट पॉइंट जानिया कोन इट हैज ए सेल्फ हैंडेड ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ अ डीसी जनरेटर. सो ये कौन होता है ना सेल्फ हैंडेड ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ द डीसी जनरेटर सेल्फ हैंडेड निजे निजे ओके एंड इंस्टेल ऑफ द whose output is up to 500 जाफर यार आउटपुट केते रहबो ना 500 वोल्ट रहबो 500 वोल्ट. So Megger is a more popular for a normal insulation testing. So normal insulation testing पे Megger को हमें व्यवहार करूचे. But for a higher voltage of testing पे Megger up to 1000 volt to 2500 volt पर्यंत हमें व्यवहार करिबा एंड आल्सो भी ने 5000 वोल्ट पर्यंत हमें व्यवहार करछे बा अवेलेबल अछि मार्केट रे ओके. सो मेगर ऑफ केते अवेलेबल अछि ना 1000 टू 2500 आल्सो 5000 ऑफ वोल्ट रो जेटा कि से कोन है तो आल्सो अवेलेबल इन मेगर ओके. and the speed of the megar keep around in a 160 of rpm 160 rpm होछि speed of the megar okay. नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन नेक्स्ट पॉइंट इज आवर मल्टीमीटर. सो मल्टीमीटर माने कोन ना मल्टीमीटर मींस इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इन ए वेरियस ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज. सो मल्टीमीटर रे हमें कोन कहछे मोर देन ऑफ वन क्वांटिटीज को हमें मेजरमेंट करछे एंड दिस इंस्ट्रूमेंट आल्सो कोन कॉल्ड एज अ एवोमीटर एम्पियर वोल्ट ओमीटर बोले हम कहछे कोन कहछे एम्पियर वोल्ट ओमीटर बोले हमें कहछे. सो इट इज मेनली टू टाइप कहया गला हमें केते प्रकार पाउच मल्टीमीटर दी प्रकार गोटे होचे एनालॉग मल्टीमीटर अनदर इज अवर डिजिटल ऑफ मल्टीमीटर. सो एनालॉग मल्टीमीटर कोन इज नोन एज एवो बा एम्पियर वोल्ट ऑफ ओमीटर बोले हमें कहउचे because that this meter is used to measure in all the three electrical of quantities जतक हम तीनटा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज से likewise current voltage and of resistance से मेजरमेंट करि परिबो. सो डिजिटल कोन now multimeter in which reading of electrical of quantities shown in a digit or directly on in a LED of a display is correct okay. and unit of instead of being shown by the in a pointer on the dial of the scale are known as a digit. So digital motor कोन ना हमरे LED of display रो से शो ऑफ करेबो and directly हम मेजरमेंट करे परबा electrical of quantities को okay. So next point is our earth of a tester. So earth tester कहले कोन बुझुचे ना earth tester is used to measure the resistance of earth. So earth रो resistance को मेजरमेंट करया पई हमें कोन व्यवहार करछे earth tester व्यवहार करछे. So earth tester is also a type of कोन ना ohmmeter. So earth resistance tester को हमें ohmmeter मध्ये कहउचे which is measure in a earth resistance जहां पर कौन मेजर करे ना earth resistance को से मेजर करे. So earth tester also called as a earth tester measure. So आपको मध्य कौन कह जाय परे आपको मध्य earth tester को earth test measure बोले हमें कहउचे. So resistance can be measured इधर कौन करा जाय ना resistance measurement करा जाय ना कौन 3 to 4 रेंज 3 ରୁ 4 टा रेंज पर्यंत से मेजरमेंट करा जाय केमती ए 0 to 50 ohm and 1500 ohm to 3000 of ohm. So 0 50 1500 हमें 3000 of ohm जो रखुचे सेटा हमें earth tester हमें मेजरमेंट ऑफ करि पारुचे okay. So earth tester work on the principle of potential drop or ohm's law or potential of a drop or ohm's law principle रे हम काम करछु. So earth tester ohm's law किंबा potential of a drop principle रे काम करछु okay. So next देखिबा difference between a tachometer and a tongue tester. So tachometer कोन मेजर करबो ना tachometer हमर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हम मेजरमेंट करबो इने कार रिवोल्यूशन बा आरपीएम बोली कहउचे ए गोटे इलेक्ट्रिक मोटर रो स्पीड को से मेजरमेंट करे के मेजरमेंट करे ना tachometer and the speed of the vehicle को हम मध्य किलोमीटर पर आवर मध्य kmph रे मेजरमेंट करूचे okay. tongue tester कोन a tongue tester is used to measure in a current in a alternative of current circuit without of any interruption. So हमें current tester कोन करूचे ना हमें measure to the current in a AC circuit रे okay AC circuit without any interruption बा कोनोसी असुविधा नै. So it is also called as a clamp on tester. So clamp on tester बोली आपको मध्य हमें कहूचे का को ना tongue tester को कहूचे. So author tachometer देखिए पॉइंट कोन दिसी ना electrical tachometer are also known as the tachogenerator. So electrical tachometer को हमें अदर वर्ड कोन कहूचे ना tachogenerator बोली हमें कहूचे
and these instruments works on the principle of a mutual induction. So mutual induction को principle काम करूचे ना tongue tester बा हम other word से clamp on tester काम करे. Okay, as a mutual induction रूपे काम करे. सो पिले माने आज पे हमें एती क्लास करबा. नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा मेजरमेंट ऑफ आरएलसी. सो हमें जतले रेजोनेंस सर्किट पढिबा, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट पढिबा, आरएलसी रे कोन कोन हमें यूजेस करूचे. देन हमें बैलेंस कंडीशन रे मते देखिबा. देन मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस मते हम जाने लो मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस कोन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट रे कोन देखिबा measure of inductance देखिए different of breeze हमें measurement करें inductance breeze, Maxwell breeze, Hay breeze, Owen breeze, Anderson breeze. तापर हम जानिबा measurement of capacitance. then the south of breeze, carrying breeze को हम जानिया केमति कोन यूज करा होचे. तापर कोन जानिबा measurement of frequency. so frequency हमें केमति measurement करा होचे Owen breeze रे measurement करा जाउचे. okay, so current sensitivity, voltage sensitivity, breeze sensitivity से विषय मदा हमें जानिबा. से लास्ट ओवरऑल कोन जानिबा ना ट्रांसड्यूसर. सो ट्रांसड्यूसर जेमितले भी 1 रु 2 मार्क पाइबा. सो कन्वर्ट माने को प्रोसेस से ट्रांसड्यूसर होची. सो ट्रांसड्यूसर रो क्लासिफिकेशन कोन, कोडा हमर पैसिव टाइप ट्रांसड्यूसर, कोडा हमर एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, एसे विषय हमें नेक्स्ट ऑफ आगु को पढिबा. ओके, सो दैट जदि हमें वीडियो टी भल लागि थाए लाइक करिवे, शेयर करिवे और अन्य मानकु मध्य जणाइबे. सो थैंक यू वेरी मच. एबे हमें नेक्स्ट लास्ट क्लास रे हमें पुनः सॉरी अपकमिंग क्लास रे हमें पुनर्बार देखा. ओके, थैंक यू.